Good morning, everyone. There's one question probably regarding linked list. I'll quickly take up the question. Question, who is this? Akshay. Yeah. So the question talking about something like there was one question regarding predicate and कहाँ पर गया? Yeah. So count the number of integers matching the given predicate. I believe it is not very complicated if you at all worked onto the link. What's that? Basically the functional concept. So if you at all worked on a functional concept, then all you need is that. Obviously, I'm talking about within a class of single linked list, whatever that you have implemented earlier into the class. I'm not writing all the methods. You please go ahead, you complete that stuff, and what you need is actually the count. What is that? The count matching something, whatever, or count if kind of function that you're looking for, and you're passing a predicate. The predicate of obviously integer, because the value is like kind of it is a predicate of integer because it is a linked list of integers. So this is a linked list of integer. I want to match with all integers, and this is kind of a predicate that we have got. If this is a predicate that we have got, what all we need to do is that we need to basically traverse the linked list. And how do we traverse the linked list? Trav is equal to head, while trav is not equal to null, trav is equal to trav dot next. ये हमको already आता है. I'm assuming this. However, now I'm interested in counting the number of elements for the given condition. If you go back and check that, the predicate is a functional interface, and for the functional interface, the what is that? The method name is kind of a test. The test method, you are passing each data element of your linked list. You're passing each data element of your linked list, and each data element, if it is matching, if the test method is returning true, I'm simply saying count plus plus. I'm simply saying count plus plus, and all I need to do is that I need to simply return the count. That's it. Nothing extra is to be done. So that is what about writing the method, and then how you can probably use it somewhere into your main class, somewhere into your main method. Obviously, you have written somewhere. So public static void main, and obviously it's like a string args, whatever is there, and inside this again you write the rest of the code. I'm not writing the whole stuff for you. So you want to call it, let's say for example, list dot, I want to check, let's say count matching, and count matching, let's say I want to count for every integer, the integer which is, let's say, mod by 2 is equal to 0. Now what this will return me? Now can you guess what this will return me? You go ahead, write system.out.println. Anyone can guess what this will return me? Yes, it will return all those numbers. How many numbers are even numbers? It is a count of even numbers. So count of even numbers, I'm saying that this particular lambda expression, which is matching a predicate. Lambda expression predicate में वाला कौन सा होता है? Which is taking some number and returning a boolean value. Taking a number and it is returning a boolean value. So this one I will take up it over here, and then we will go ahead with this. Correct? So this condition will be actually invoked from here all the time, and then whatever condition is there, it will be actually matching. I hope Akshay, you got the answer to your question. What we can do and how we can do. Good. Okay. Next. Sure. There is one more probably request, and that request is regarding ये public chat disabled है क्या? Why people are posting me the question personally? हाँ, नहीं, people are putting me question personally. Problem क्या हो जाता है? वो जो बाकी लोग जो join होते हैं, so उनको लगता है कि नीलेश सर को बहुत पढ़ाने का शौक है, इसलिए पढ़ाते रहते हैं. They are scared. What to scare into that? उसमें scare होने वाली क्या बात है?
और अच्छी चीज है कि हम लोग ऑनलाइन डिस्टेंस के ऊपर है, तो अगर मैं चाहूँ कि आपको खा जाऊं तो वो भी नहीं खा सकता हूँ, नॉट पॉसिबल, इजंट इट? सो वी आर एट अ डिस्टेंस, और लाइक ऐसा कुछ है क्या कि लाइक यू डोंट वांट टू शो द पीपल कि also आई एम ऑल्सो डूइंग असाइनमेंट, आई एम ऑल्सो स्टडिंग, ऐसा कुछ कर रहे हो? लाइक बाकी लोगों को पता चल जाएगा मैं पढ़ रहा हूँ तो बहुत अजीब लगेगा उनको, इज इट लाइक दैट? सो डोंट वरी, यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट इट पब्लिकली यार, दिस इज योर मोस्ट वेलकम। मैंने कहा ना, अगर मुझको आंसर नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा भाई, सॉरी मेरे को नहीं आ रहा है, मैं कल ढूंढ के बताता हूँ, तो आप चिंता मत करो, दैट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन। चलो मैं पीछे जा रहा हूँ, देयर इज वन मोर रिक्वेस्ट, एंड दैट इज रिगार्डिंग कहाँ पर गया रे, भूल गया मैं। It is regarding find the middle point of the linked list. So how do you find the middle of a linked list? Oh, that is something I need to find out. I'll just go ahead. And so there are two conditions are written, and there are two conditions written, and then people are asking, ha Pranit, so why there are two conditions written? So it is something like this. We'll say, let us just try it, and I'll just show you both the conditions, कि why two conditions are there and why ये दो अलग अलग क्यों कंसिडर करना पड़ता है. So let's say at this like a 10, say 20, 30, 40, 50, 60, 70. Now you find that these are kind of a these are kind of a odd number of elements in a list. And let me continue the same linked list once again, and with one more element in place, where I'm saying that we have got like a 80, where even number of elements are in place. Now you try to solve both of them. So one is fast pointer, another is slow pointer. What is the fast pointer and the slow pointer? And what we are saying is that जब fast pointer at the end पहुंच जाएगा तो slow pointer in between पहुंच जाएगा. I guess basic logic is clear to everyone. So fast pointer, we are saying that it is next to next. In that iteration, this is going one step ahead. This is going next to next, but in this particular step, this is going one step ahead. Again on the next iteration, this is going next to next, and this is going one step ahead. What is this? Now you find that if this reaches the last element, so यहाँ पर next to next, next to next, next to next. So every time you are saying fast is equal to fast dot next to next. So there is, every time you say fast is equal to fast dot next to next, I guess what is that? You are able to reach till the last node. Now it is over last node. Then it simply means that in this particular case, you find that the fast dot in this case, fast dot next is equal to null, right? But the second case, जहां पर even number of nodes है, जहां पर even number of nodes है, you can again compare, right? And then you continue further, go like a next to next, right? And then first iteration, it is going like this. Second iteration, this is going next to next, and this is going like this. Next iteration is going next to next. This is going somewhere over here. If you check it over there, in this particular case, if I say next to next, now it is actually reaching to the null. It is actually reaching to the null. So what we are checking over there is simply, what we are checking over here is simply fast is equal to null. So when you have got even number of nodes where you have got an odd number of nodes, so there are two cases I need to consider, and that is the reason these two things are available. Who is that? Pranit, I hope you got the point. Why two conditions are there? Two conditions are there because two conditions are there because we want to ensure that two are there. हाँ क्या हुआ अक्षय? In second case the output is 50 because last iteration slow points to the next. हाँ yes, that is fine. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. See कोई ना कोई तो ये मैं मूव करना भूल गया. Thank you. हाँ see anyway उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला because ultimately आपको मिडल ढूंढना है, या तो इस साइड का मिडल या तो उस साइड का मिडल, कोई ना कोई तो एक मिडल होने ही वाला है, सवाल ही पैदा नहीं होता. That is, I hope, absolutely right. So why there are two conditions are there? There are two conditions
because this. Akshay is having question, why it is and not or. See, and हम लोग कब यूज करते हैं, जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यू वांट टू कम आउट. एंड हम तब यूज करते हैं जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यू वांट टू कम आउट. सो आई एम सेइंग दैट इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, स्टिल आई वांट टू कम आउट. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, स्टिल आई वांट टू कम आउट. इजंट इट? एंड सिंस दोनों कंडीशंस आर फॉल्स, अगर कोई दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होता है तो आई वांट टू कम आउट. अगर आप लोग और देते हो तो और कैन बी डेंजरस. इन दैट केस कहीं ना कहीं आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आ सकता है. सो और का मतलब होता है लाइक दिस. लेकिन मैं चेक, लेकिन मेरे से वैसे मैंने क्या लिखा है मेरे को भी एक बार देखने दो, क्योंकि आप लोगों ने इक्वल टू लिखा है या नॉट इक्वल टू लिखा है. इवन नाउ सिंस यू आस्क्ड द क्वेश्चन, इवन आई फाउंड दैट मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है. लेट मी चेक, कोई बात नहीं, विल फाइंड आउट. यस, इट विल गिव यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन समवेयर. कंडीशन क्या लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने इक्वल टू लिखा है. बाय द वे मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, मैंने नॉट इक्वल टू लिखा है. मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, नॉट इक्वल टू लिखा है. सो इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल and this is not equal to null, in that particular case you just want to come out. आपको अगर करना है, आप लोग उल्टा कर सकते हो. उल्टा क्या कर सकते हो, आप लोग लिख सकते हो फर्स्ट इज इक्वल टू null और fast dot next is equal to null. What I'm saying is that the same condition could be written something like this. और आप लोग लिख सकते हो, but in that particular case, you can say that either this is equal to null or its next is equal to null. आई होप अक्षय दैट इज क्लियर नाउ. तो वो लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आप लोगों ने कंडीशन क्या लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें एंड के लिए जाना है या अपने और के लिए जाना है. हमने नॉट इक्वल टू लिखा है या फिर हम लोगों ने इक्वल टू लिखा है. एनीवे, चलो दैट इज डन. सो दिस इज ऑल्सो ऑल राइट. फिलहाल के लिए मैंने नॉट इक्वल टू लिखा है, तो जो लिखा है मैं उसको वैसे ही छोड़ रहा हूँ. एनीवे, द प्रेडिकेट क्वेश्चन वाज आस्क्ड, आई एक्चुअली आंसर्ड दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर क्वेश्चन. Yes, we will do. So there was some question regarding Sarang, can you be specific to your question? Yesterday we talked about two reverse functions. It was not one. We talked about two. हाँ, रिवर्स वी लर्न टू टाइम्स. देर आर एक्चुअली थ्री रिवर्स फंक्शन थे. एक हम लोगों ने नॉर्मल रिवर्स किया था, एक हम लोग रिकर्शन से रिवर्स किया था, एक हम लोग रिवर्स डिस्प्ले किया था. सो ऐसे टोटल तीन फंक्शंस हमारे लिस्ट में थे कल, इफ यू कुड रिकॉल दैट. या रिकर्शन वाला, हाँ. सो बी स्पेसिफिक, दैट इज गुड, नो प्रॉब्लम. हम लोग कहाँ पर थे? सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन. All right. So in this particular question, like a reverse using recursion, the reverse using recursion, I said that you need to follow the logic. You need to follow the logic where, see, there was actually two steps that I was trying to explain you. One step, I first explain you how you can build your logic, how you can build your logic. And step number two, probably I try to explain you how this logic works. Correct? So I'm just going back and talking about it once again. So if my linked list is beginning from this, so the logic, recursive logic in the sense divide and conquer logic. What divide and conquer logic says? The divide and conquer logic simply says that you try to put it in such a way, so that you can explain the process in terms of itself. Explaining process in terms of itself is pretty simple in this case. What I'm saying is that you can, अगर मुझको ये लिंक लिस्ट रिवर्स करनी है, I'm saying that first reverse the rest of the linked list, and then try to add this node at the end. So as you reverse this linked list, the output will be something like this, like a 40, 30, 20, and then this particular node, obviously in this particular case, this node
is a last node. So this node should be added at the end over here. At the end over here, that is something that you can do it, nothing much, right? You continued further, you continue further. The next, but sir, what about how this much of part will be, ये part कैसे होगा? अच्छा ये part कैसे होगा? So I was trying to tell you that you consider internal recursion will go something like this. For 20, 30 and 40, the linked list is like this. Obviously this is h, this is the head of this. And now again follow the same procedure, that you reverse the rest of the list and then append this at the end of the last node. Okay, you are saying that reverse of this, तो इसका reverse कैसे होगा? इसका reverse simply हो जाएगा 40 and 30. इसका reverse होगा 40 and 30, and then this 20 is something I want to add at the end. I want to add at the end, which is obviously after the tail pointer. Tail pointer अभी ऐसा कोई tail pointer हम लोगों ने maintain नहीं किया है. It is kind of a local variable that we are used. But again, the question is that how this much of part will be reverse? How this much of part will be reverse? So 30, 40, that is in front of you. You go ahead, you put this as, let's say, this is head node. In this particular case, ये आपका head node है. ये आपका head node है. How do you really do this? Again, recursive logic still remains same. The recursive logic says that go ahead, deal with the rest of the linked list, and then add this at the end. But as you start dealing with the rest of the linked list, as you start dealing with the rest of the linked list, अब आपका linked list जो है वो linked list है इतना सा, एक ही नोड है. Now since linked list एक ही नोड है, there is a single node, so I'm saying that this itself will be kind of my tail pointer. यही मेरा tail pointer होगा, और यही this node itself is kind of will be head. हेड, तो जब लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड मतलब क्या, जिसका नेक्स्ट नल होता है, सो अगर वो वाला नोड होगा तो उसको मैं ग्लोबल हेड करके ट्रीट करूंगा, नंबर वन. और यही मेरा लास्ट नोड होगा विच आई एम रिटर्निंग. इफ आई एम रिटर्निंग दैट, इफ आई एम रिटर्निंग दैट, उसके एंड में ये 30 को ऐड करना है. दैट्स इट. सो व्हाट विल हैपन, what will happen? So every time I'm just putting a very simple logic कि हमको logic divide कैसे करना है. So it is something over here. You first try to do in a reverse order. You try to reverse the rest of the linked list. You reverse the rest of the linked list. Continued further. T dot next is equal to h. T dot next is equal to h. So वो recursive reverse मुझको क्या return कर रहा है? It is returning with the last node. और जो भी last node आपको return कर रहा है, you see in any step what you are doing, जो भी लास्ट नोड आपको रिटर्न कर रहा है, उस लास्ट नोड के नेक्स्ट में हम लोग जो करंट हेड है उसको हम लोग कर रहे थे. सो उसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं टी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड. बट हेड के नेक्स्ट में अभी क्या है, यू सी दैट हेड के नेक्स्ट में अभी अगले नोड का एड्रेस है. आई डू नॉट वांट टू डू दैट, क्योंकि वैसे भी वो लिंक लिस्ट हमारा लास्ट नोड बनने वाला है. अगर वो हमारा लास्ट नोड बनने वाला है और वैसे भी ये सिंगली लीनियर लिंक लिस्ट है, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में तो नल होना चाहिए. And that is the reason the next line of code saying that it is head dot next is equal to null. And then now since you added that node at the end, now that node becomes the last node which you want to return it, which you want to return it, so that that part can be used in a previous call. That part can be used in a previous call, क्योंकि जो कुछ भी आप लोग यहाँ से रिटर्न करने वाले हो, that will be collected in a previous part over here. And then t dot next is equal to h. It should work like this, correct? And the base condition, as the paperwork we had done, we found that जब नोड अकेला होता है तो उसको रिवर्स नहीं किया जाता. अकेला मतलब क्या, उसके नेक्स्ट में अगर नल होता है तो उसको रिवर्स करने का कोई मतलब नहीं है. एंड देन आई वाज सेइंग दैट अगर वो अकेला नोड है, वो अगर अकेला नोड है, just go ahead, simply say head is equal to h, and then simply say return h. I hope this is how the whole code was built as such. And not only this block code was built like this, but again, the next question on the top of it, the next question on the top of it, how it is getting executed. So I was trying to tell you that इसको हम लोगों ने recursively call दिया है from a wrapper function. You must have seen that हमने एक wrapper function लिखा था, और उस wrapper function के ऊपर से हम लोगों ने इसको call दिया था. The wrapper function recursive reverse whatever the function was there, और बाद में उस function के अंदर से we have given a call with the head. As we have given a call with the head, so you have seen that recursive reverse, and then we are passing the address of the first node. We are passing the address of the first node.
which is the head itself. कोड शायद आपके सामने है, कहाँ पर था? I'm talking about this part. Yeah. So this reverse display, no, not reverse display, this recursive reverse is basically we can call to the recursive reverse of head. I'm talking about this. So you will be actually calling this. You'll be calling this. You check that. कहाँ पर था हमें? हाँ, now you check that. Now your h is basically pointing to this. As h is pointing to this, you check inside your code, is h dot next is equal to null? Sorry, h dot next is not equal to null. This is not the last node. This is not the last node. You are making a recursive call. You are making a recursive call for the h dot next. Obviously, h dot next, you see it over here. It is basically 20. It is basically 20. So ultimately, your linked list something like this. Let me write it over here once again. 10, 20, 30, 40, and h, which was over here, you are making a now recursive call, making a recursive call. So you are going from here to here and making call to the recursive reverse and making this as a 20. Okay, that is good. That is good. But जब आप लोग recursive call करोगे तो आपका जो h है, जो अगले कॉल का जो h है, next call h will be somewhere over here. Next call is h is over here, and again you check the story. Is it really the last node? Oh no, that is not also the last node. If that is not also the last node, what do you need to do? You again continue further and again you make a recursive call. Again you make a recursive call. अब recursive call किसके लिए होगा? 20 के next के लिए होगा. ये 20 के next का call is nothing but 30 है. ये 30 है. So in that particular call, what will happen? The h, उसका जो local h है, that h will point to this. हम लोग रिकर्शन पढ़ा है. लोकल वेरिएबल्स आर ऑलवेज क्रिएटेड ऑन टू द स्टैक और आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो क्रिएटेड ऑन टू द स्टैक. सो हर एक फंक्शन कॉल का खुद का एच होने वाला है, हर एक फंक्शन कॉल का खुद का टी होने वाला है. ये हमको ऑलरेडी पता है. उतना रिकर्शन मैंने आपको पढ़ाया, फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाया. सो इवन दो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, हम लोगों ने बाइनरी रिसर्च से पहले मैंने आपको पूरा रिकर्शन पढ़ाया था. आपको याद है ना? हेलो, हमने पूरा फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग प्रोबब्ली वी हैड ड्रॉन एंड एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि रिकर्शन कैसे काम करता है, कि कितने फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न. सो वेदर यू पीपल नो और नॉट, तो मैंने वापस से एक बार पढ़ाया था. रीजन वाज दैट कि जब हम लोग ऐसे ट्रिकी कोड लिखेंगे, पीपल शुड नॉट गेट कंफ्यूज. दैट वाज द पर्पस. अगेन यू कंटिन्यू फर्दर. again you continue further. Again we have like a recursive reverse. ये क्योंकि 30 का नेक्स्ट, ये 30 का नेक्स्ट भी नल नहीं है, इसका नेक्स्ट भी नल नहीं है क्योंकि वो भी लास्ट नोड नहीं है. सो व्हाट विल हैपन? अगेन यू आर मेकिंग द नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल. द नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल, ए नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल. तो ऑब्वियसली वो 40, 30 के नेक्स्ट में 40 है, तो दैट वो जो रिकर्सिव कॉल है उसका एच इसको पॉइंट कर रहा है. सो आई एम सेइंग दैट दिस एच इज नाउ पॉइंटिंग. अल्टीमेटली वी रीच टू अ प्लेस जहां पर ये कंडीशन ट्रू होने वाली है. नाउ दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू. सो यू आर सेइंग दैट इसको अभी हेड कर दो, कोई बात नहीं. तो हम लोगों ने इसको हेड कर दिया. ये वैसे भी लास्ट नोड शुड बिकम नाउ हेड एंड देन यू वांट टू रिटर्न एच. सो ये जो एच है, हाई लुक एट दिस, यहां से जो आप लोगों ने रिटर्न किया है, ये रिटर्न कहां पर जाने वाला है? ये रिटर्न अल्टीमेटली उसके प्रीवियस कॉल में जाने वाला है. डोंट फॉरगेट दैट. अल्टीमेटली उसके प्रीवियस कॉल में जाने वाला है. तो उसका प्रीवियस कॉल क्या है? गो एंड चेक. इसका प्रीवियस कॉल है, इसका प्रीवियस कॉल है 30 वाला कॉल. ओ यस, इसका प्रीवियस कॉल है. हम लोग यहां से यहां पर आए थे, यहां से यहां पर आए थे. अब नाउ आई एम गोइंग रिवर्स, यहां से यहां पर जा रहा है. तो जो प्रीवियस कॉल है, जो प्रीवियस कॉल है, इन दैट केस दिस विल बी टी. अब वहां पर जो कलेक्ट किया है, वहां पर आपने उसको टी करके कलेक्ट किया है. सो डोंट फॉरगेट. सो नाउ दिस इज बिकमिंग अ टी. This is becoming a T for the earlier call where the H itself is 30. H itself is a 30. You can take a look at this diagram. So this was T and this is H. And then now what you are doing, you are following next three lines of code, which is saying that T dot next is equal to head. T dot next is equal to head. So इसके नेक्स्ट में you are adding head. Okay, done. And then h dot next, h is 30, you are making it null. That is all right. So now it is no more pointing to this. And now again you are saying that return h. And now where you are returning h, where you are returning h, I'm returning it
ये जो h यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ये जो h यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ये कहाँ पर रिटर्न हो रहा है? प्लीज नोट दैट it is again getting returned to the previous call. And what is the previous call over there? The previous call over there, you find it, it is a 20s call. In 20s call, your h is pointing to 20, and ये जो लास्ट नोड था, जो पहले वाला जो h था, जो रिटर्न हुआ है, so that you are taken like a t. So again, I'm talking about a scenario. Now we are at this scenario. This is h and this is t. Now what is to be done? Now what is to be done? Again, follow the practice. We t dot next is equal to h. So t dot next is equal to h. So ये जो t है, उसका next है, उसके अंदर में h आना चाहिए. ये आ गया है. What is next? You continue further. H dot next is equal to null. So h dot next is equal to null. That is also gone well. And then return h. Return h. Again, this is the last node which I am returning. And if I am returning that, again, where it will be taken up? It will be taken in an earlier call. Oh, it is taken in an earlier call. You continued further. So earlier call means you are going from here to here. So ये वाला functionality record destroy होगा. And in that earlier call, the h is over here, and that the old h is collected as a t. It is collected as a t. You again continue further, and again you repeat the part of that process. Next three lines. T dot next is equal to h. T dot next T dot next is equal to h. I see that. Now this is no more pointing to the next node. H dot next is equal to null. H dot next is equal to null. Okay, it is there. And further, you simply say return h. Return h. Now this h you are again returning back, which will be which we have not really collected into the earlier call. That's it. And now my new linked list is where head is like 40, 40 is next was like 30, 30 is next is pointing to the 20, and 20 is next pointing to the 10. That's it. I hope, Sarang, this is fine. Good. Wait, to be frank, for this purpose, you could have always watched the video once again. Anyway, you have any other questions? Let me know. Yeah, I'm just saying so because we may not, waste time of like learning the core points. नहीं तो otherwise ऐसे हो जाता है कि फिर basic points spend too much of time, and then the advanced topics they didn't get enough of time. It usually happens. So ideally, or these questions can be definitely taken again. What is that of this? Like a big questions are there. Repeating the whole stuff, it takes too long time. So I really what is that? क्या कहते हैं इसको? Appreciate if you could ask a pinpointed question. So you are like most welcome. चलो और भी कुछ पूछना है? Go ahead. जरा जल्दी जल्दी पूछो. भाव मत खाओ. Should we get started with today's session? Okay, that is great. Chalo. So today's session, by the way, the last session that we were talking about was nothing but stack, and we were talking about अरे कहाँ पर गया? हाँ, postfix evaluation. Like a postfix evaluation code. So the code has done. It was like very simple. आई एम वेरी श्योर कल 1 बजे के बाद में बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो गए थे लेक्चर में से. तो जो लोग बाद में ड्रॉप आउट हो गए थे फॉर एनी गुड रीजन, आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने बाद में वो वीडियो देख के वो कवर कर लिया होगा. सो आई एम होपिंग सो, राइट. वैसे मुझको कभी कभी लगता है कि लोग ऐसे डिसाइड करके आते हैं कि हमारा लेक्चर 9 से 1 होगा, 9 से 1 बजे तक ही हम लोग सुनेंगे जितना सुनना है. अब 1 बज गया, अभी हमारा टाइम हो गया है. नाउ टाटा बाय बाय, अब तुझको जो पढ़ाना है तू पढ़ाते रहे, हम तो जा रहे हैं करके. तो इफ यू आर फ्रॉम दैट कैटेगरी, आई एम वेरी श्योर यू आर टेकिंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर ट्राइंग टू कवर अप द टॉपिक्स बाय योर ओन वेज. when people always keep asking us, तो सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट यू कैन ऑलवेज क्या कहते हैं उसको, यू कैन ऑलवेज स्किप, करेक्ट. एंड देन when you always skip, you will also get the results in the same way. प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट. सो नाउ पीपल बाद में ये ब्लेम मत करना कि सर वो हम लोगों ने ऑनलाइन बैच किया इसलिए हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ.
सी इट इज नॉट अबाउट आपने ऑनलाइन किया ऑफलाइन किया, आपने कैसे किया, दैट विल मैटर अ लॉट गाइज, प्लीज डू अंडरस्टैंड। तो वैसे ऑफलाइन बैच में भी सबका प्लेसमेंट नहीं होता है, कुछ लोग वैसे भी छूट ही जाते हैं। अगेन वापस से उन्होंने ऑफलाइन किया था इसलिए वो लोग प्लेस नहीं हो रहे थे, जिन्होंने जैसे किया है वो लोग वैसे भरेंगे। वो हम लोग कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी वगैरह काइंड ऑफ स्टफ। सो यू पीपल नो दैट। तो वो फाइनली आपके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू गेट प्लेस और नॉट। इट इज नॉट अबाउट ऑनलाइन और ऑफलाइन, इट इज ऑल अबाउट हाउ you are studying, it is how you are studying. So it is again like individuals, it is an individual skill. So you will always find that. तो सर हमारा प्लेसमेंट होगा क्या? आई वुड से दैट जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग अभी सीरियसली ले रहे हैं, जो लोग अभी शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं, जो लोग अभी खुद को पुश कर रहे हैं, आई नो दैट द थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड। 4 घंटे हम लोग लेक्चर सुन रहे हैं तो सर बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, बट दैट इज व्हाट व्हाई वी आर हियर, दैट इज व्हाई वी आर हेयर, दैट इज व्हाई वी आर हेयर टू लर्न। अगर हम लोग खुद से पढ़ सकते थे, ट्रस्ट मी, अगर आप लोग कहते नहीं सर मैं काम करता हूँ, मैं डेटा स्ट्रक्चर मैं खुद से पढ़ता हूँ, मुझको आपके साथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली यू कैन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर इज लाइक दैट। सो आई टेक अ 10 बुक, आई रीड इट बाय माई सेल्फ, स्टार्ट डूइंग इट, आई एम वेरी श्योर only one data structure book that will take more than 6 months, even though you are studious, even though you are studious, and if you are the one who are likely to skip the lectures, I am very sure it will not even complete in 6 years. Why? We are paying for the course, so don't forget that. तो पुश योर सेल्फ, दिस इज ऑलवेज नीडेड, इट इज ऑलवेज नीडेड। ऐसा नहीं होने वाला है कि वो सर वो आसानी से पूरा कोर्स समझ में आ जाएगा। अब अभी तो आपके 2-3 मॉड्यूल हुए हैं, स्लोली स्लोली कोर्स विल प्रोग्रेस, स्लोली स्लोली मोर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज विल कम अप। सो यू नीड टू मेक योर माइंड सेट कि ये पढ़ने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वेर एवर यू फाइंड दैट नहीं यार ये सर बहुत हेवी जा रहा है, आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, व्हाई यू ज्वाइन दिस कोर्स? अच्छा प्लेसमेंट होना था इसीलिए ज्वाइन करा ना, तो प्लेसमेंट होना है तो आपको पढ़ना नहीं है? Please ask question to yourself, push yourself. You know, your willpower is probably more important than how good your teachers are. So हम लोग कहते हैं नो ब्रह्मदेव भी ऊपर से आके अगर पढ़ाते हैं, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, then it is impossible. We are like very, ordinary people, ordinary teachers. No, no way. Anyway, it is up to you. I'm just leaving it for you people to think and go ahead. Anytime you have questions, you can always ask. You are always welcome. चलो, सो प्रीफिक्स का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? ए पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, आई एम वेरी श्योर जो लोग लास्ट तक थे उन्होंने पढ़ लिया, जो लोगों ने कल 1 बजे के बाद में गायब हो गए थे उन्होंने वीडियो देख लिया होगा, आई एम वेरी श्योर। तो आप लोगों ने देख लिया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। एंड देन व्हाट इज प्रीफिक्स इवैल्यूएशन? अगेन इट फॉलोज अ सिमिलर टेक्निक, सिमिलर लॉजिक। सो व्हाट इज सिमिलर टेक्निक एंड सिमिलर लॉजिक? इट सेज दैट you go in like a reverse order, you go in reverse order। लास्ट टाइम में हम लोग कह रहे थे वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट, in a prefix we are going from right to left, in a prefix we are going from right to left, ये पहली चीज, we are going right to left। and what is the algorithm? Algorithm is similar, if you find the operand put it onto the stack, if you find it operand put it onto the stack, if you find it operator pop to operands, pop to operands, do the operation, whatever is the result push it back to the stack, again you continue, again get the next operand, again if it is operand put it onto the stack, put it onto the stack, if it is operator pop to, do the calculation, whatever is the result push the result back to the stack, and you continue doing this, and you continue doing this. That is what all you need to do. Let us just continue further and we start doing it on paper. So 3 is operand, you put it onto the stack. 7 is operand, you put it onto the stack. Minus is operator. Now if the minus is the operator, all I need to do is that pop the operand, pop second operand, do the subtraction. Subtraction is probably 4. Put that subtraction result back to the stack. Okay, you continue further. You continue further. Next, you have got like a 1. 1 is operand, put it onto the stack. One next is probably dollar. Dollar. How it is solved? The dollar, you get 1 over here, you pop 4, 1 raised to 4 is basically 4, the result is 4, that you are again putting it onto the stack. Okay, that is good. You continue further. You continue further, we have let's say 2,
that is good. We have, let's say, 6, that is good. We have, let's say, division. All right, division is there. If you have a division, you continue further. You pop 6, you pop 2. 6 divided by 2 is 3. The result is 3. That result 3, you want to push it back to the stack. Okay, you continue further. You continue further. 8. 8 is a operand. I want to push it onto the stack. Then next, minus. Minus is a operator. Operator, प्लीज नोट, जो हम लोग पहला पॉप कर रहे हैं वो हमारा पहला ऑपरेंड है, जो हम लोग दूसरा पॉप कर रहे हैं वो हमारा दूसरा ऑपरेंड है. 8 minus 3 comes out to be 5. The result 5, I want to put it back to the stack. Okay, that is done. You continue further. You have, let's say, 4 operand, put it onto the stack. 9, oh sorry, multiplication. Multiplication, so you pop 4, you pop 5. 5 4 is 20. The 20 result, we want to put it onto the stack. Okay, that is great. You continue further. What is the next part? Like a 9, put it onto the stack. 5, put it onto the stack. You continue further. Plus, plus, okay. So 5 is out. नहीं sorry, जो पहला पॉप किया था वो पहला ऑपरेंड, जो दूसरा पॉप किया था वो दूसरा ऑपरेंड. 5 plus 9 comes out to be 14. 14, I have to put it onto the stack once again. Okay, done. You continue further. We will say minus sign. The minus sign again. 14 minus 20, result comes out to be minus 6. मैंने कुछ तो गड़बड़ किया ऐसे मेरे को बहुत लग रहा है. Yes, correct. $1.04. A $1.04 was 1. Yes, thank you. Okay, no problem. And then minus 6, you put it onto the stack. Minus 6, the result you put it onto the stack, and again you continue further, and then you are into the plus sign. You're into the plus sign, so you get, say, minus 6 over there. और वो जो $1.04 था, it was a 1:4, so that was a mistake. So no problem, हम लोग we have just rectified it. So minus 6 plus 1 comes out to be minus 5, and that minus 5 you want to put it onto the stack, into the stack, and again you continue. You continue, but you found that everything is done. If everything is done, whatever is the topmost, that is nothing but our final result. That's it. So sir, that is all about algorithm. Yes, that is all about algorithm. Is it exactly same as what we had seen yesterday? So जो हम लोगों ने postfix evaluation का जो algorithm किया था, वो algorithm और ये algorithm, is it quite similar? Yes, it is quite similar. So all I will do is that, let us not waste too much of time onto this. Let us quickly go ahead. Let us quickly go ahead and let us copy paste the code. Not only copy paste the code, let us update the code. I hope code sharing is working for all. It is solve postfix and now solve prefix. We have got. Solve prefix. ऐसा postfix भी आपके पास है. अब ये prefix का function. तो हम लोग क्या कह रहे हैं? अब हमें यहाँ पर उल्टा जाना है. A traverse postfix from left to right. नहीं, not left to right. Then it should be right to left. और हम लोग postfix की बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम लोग prefix की बात कर रहे हैं. So this is like a prefix expression and I want to traverse in like a reverse order. चलो अच्छी बात है. It is a prefix operation. I want to traverse in reverse order. How do I traverse in reverse order? Probably I can start it with this length minus 1. A length minus 1. I can say I is greater than or equal to 0 and I minus minus. I guess that would be the easiest way. I can go in like a reverse order. Okay, now you want to take each symbol or each character from this. This is going to remain same. If the symbol is going to be the operand, you want to push it onto the stack. That is also all right. All I need to do is that I need to just convert it from the character to corresponding integer. तो हम लोगों ने पहले इसको character to string convert किया और बाद में string to integer convert किया है. यहाँ पर मैंने explanation भी लिखा हुआ है. The character to string, it is converting into the double quotes, and that double quoted stuff I pass it to the parseInt function, which is converted to the plain integer 5. I hope people understand that this is ASCII value of 5. This is not 5. This is double quoted 5. That is nothing but string 5, and this is nothing but the actual integer numerical value 5.
Anyway, you continue further. You want to pop two operand from the stack, but now यहाँ पर हमने B और A उल्टा किया था, अब हमें उल्टा नहीं करना है, अब हमें सीधा करना है. Now it is a int A, int B. It is all right. Then you go ahead. Calculate the result. Calculate the result. You continue further. एक calculate का कल हम लोगों ने एक helper function लिखा था, तो वो helper function आपको सामने ऊपर दिख ही रहा है. लेकिन helper function that is available. नॉर्मल जो कुछ भी ए बी आपने पास किया, ऑपरेटर पास किया है, उसके डिवीजन पास किया तो डिवीजन करो, प्लस पास किया तो प्लस करो, मल्टीप्लिकेशन पास किया तो मल्टीप्लिकेशन करो, ये डॉलर पास किया है तो डॉलर करो, व्हाटएवर. सो ऑल दैट ऑपरेशन वी आर डूइंग, whatever is the result you are again putting it onto the stack, and this will continue all the time. When all symbols are completed from this little expression, pop the final result and return it. So will it give me the same result? Ideally it should give you the same result. Let us just check it whether it is true or not. Is it really giving me the same result or it is not giving? Let me try to write plus minus plus 5 9 multiplication 4 minus 8 divided by 6 2 dollar 1 minus 7 3. Okay, this looks good. And if it is good, let us try to call the same function once again. Not same function, the prefix function once again. Solve postfix. ये तो चल ही रहा था, वो कल ही चल रहा था. Now solve prefix is another one that we have got. Right click, run as Java application. Oh, acha, sorry. We need to pass the prefix to that. Copy paste is very dangerous tool, so there are likely chances that you will be committing the mistakes. Now you find that आप लोग उसको postfix से solve करो चाहे prefix से solve करो, choice is yours, and then it is working well. Why don't you copy paste? Try it once again quickly. Nikhil, I guess you were also not there into the last till the end of yesterday's session. Yesterday's session, someone asked me the question, and I even given an answer of this the same question, isn't it? In evaluation, we use a single digit number, but if 2-digit number, then how to take that number? I guess I had answered that. Or that is one of the assignment, Nikhil. Can you check? और उस assignment में hint भी है कि if you are having an expression like that, please take it kind of a space separated, and then you can use string dot split to split this separate one. And once you have splitted that, then you can do the further operations, right? असाइनमेंट पढ़ लो, और दूसरा जो आगे वाला हिंट जो मैंने कल दिया था, इट वाज स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट. I'll just go back. हाँ, line number 55. Yes, I'm repeating. What I need to do is that I need to go from right to left. Right to left मतलब क्या? Last character to first character. How do you go from last character to first character? A string is like a character array. If string is like a character array, what is the last element? The last element is nothing but length minus 1. जो भी अगर आपका लेंथ अगर n है, then n minus 1 will be the last index. So n minus 1 will be the last index. So हमने वहां से शुरू किया है. I is greater than or equal to 0, और हम लोगों ने I माइनस माइनस किया है, तो हम लोग उल्टा जा रहे हैं. सो जो सबसे पहले हमारा लास्ट वाला इंडेक्स था, उसके बाद में सेकंड लास्ट इंडेक्स, थर्ड लास्ट इंडेक्स, फोर्थ लास्ट इंडेक्स, ऐसे करते 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 वी आर गोइंग टिल द 0th इंडेक्स. सो वी आर जस्ट गोइंग इन लाइक अ रिवर्स ऑर्डर. आई होप पूजा दैट इज फाइन. इट इज एज गुड एज लाइक द वे वी आर ट्रेवर्सिंग द एरे इन रिवर्स ऑर्डर. वैसे ही कुछ किया है, बाकी कुछ नहीं किया है. सिर्फ यहाँ पर हम लोग लेंथ -1 कर रहे हैं कि वहां से शुरू करो, 0 तक जाओ, और I माइनस माइनस उल्टा जाओ, और बाद में हर एक कैरेक्टर को रिट्राइव करो, एंड देन फॉलो द रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑन द टॉप ऑफ इट. चलो, ग्रेट. सो द थिंग्स आर डन वेल, थिंग्स आर अंडरस्टूड वेल. वैसे पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन एंड प्रीफिक्स इवैल्यूएशन, दे आर लाइक प्रीटी सिंपल एल्गोरिथम्स. हाँ, व्हाट इज लाइक बेटर एल्गोरिथम्स? I will go ahead. Infix to postfix conversion or infix to prefix conversion, this usually takes bit more time than the postfix evaluation or prefix evaluation. They are bit tricky to digest. Don't worry, we will go ahead. And once again, I will only focus on a postfix part. जो आप लोग अगर postfix आपको ठीक से समझ में आ गया है,
Prefix, you people can do it by yourself. Prefix, you people can do it by yourself. So let me just focus on a postfix part. How do I convert infix to postfix? कल कैसे किया, अपने पास टाइम कम था इसलिए मैंने शॉर्टकट मारा, तो मैंने डायरेक्टली पोस्टफिक्स ले लिया और इसको इवेल्युएट किया. बट इन रियल वर्ल्ड आप लोग एंड यूजर को ये नहीं बोल सकते हो कि भाई पोस्टफिक्स एंटर करके दे दे. सो एंड यूजर को आप लोग क्या बोलने वाले हो? एंड यूजर को आप लोग बोलने वाले हो, प्लीज गिव मी द प्रीफिक्स वन, please give me the, sorry, give me the infix one. So end user is going to give you the infix, end user is going to give you the infix, and then it will be your responsibility to convert infix to, it will be your responsibility to convert infix to postfix and infix to prefix. तो अपना जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो था वो कुछ ऐसा था, infix is equal to 5 plus 9 minus 4 इनटू, आप लोग नोट किया यहाँ पर पैरेंथेसिस भी है, वेरी गुड, 8 minus 6 by 2 plus 1 dollar, and then 7 minus 3, 7 minus 3. Okay, I guess it was there, correct, I believe it is correct, मैंने टाइपिंग में कोई गड़बड़ नहीं किया है तो. And then somehow I want to write a function, listen carefully, I want to write a function which will convert infix to postfix. So infix टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करने के लिए मुझको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द पोस्टफिक्स, I will be taking the infix expression from the user, and then whatever infix expression I have taken from the user, that infix expression I will convert it into the postfix, that I will convert it into the postfix, and then that postfix further I can solve it. I guess that is like idea behind it. तो अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला फंक्शन बनाना है. And what that function input is, you can make a note. The function input is a string, let's say it is a postfix, you can say, and then this postfix is something that I want to return. In this postfix, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन करेंगे, इस इनफिक्स को हम लोग पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद में उसको रिटर्न करेंगे. दैट इज बेसिकली द आइडिया. आई होप द पिक्चर इज क्लियर. हमें क्या करना है? Obviously we will not write a code, we will first understand the algorithm on paper, how the things are going. We will do that whole algorithm step by step. Once you are comfortable, let me know, then and only then we will go and try to complete the code. So कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे. But as I told you, I'll be explaining only one part. I'll be explaining only infix to postfix. Infix to prefix will be your homework. So please pay attention on the first part. So infix to postfix, what do you need? I again need a stack, but this time there's a small change in the story. I need a stack of operators. What I need? Now I need a stack of operators. I don't need a stack of operands. Okay, that is good. And if it is a stack of operators, how does it go? Let us just begin with, and you understand that you need to also create the postfix string. Let's say that this is my postfix string that I want to prepare, the postfix string that I want to prepare, and let us get started. The rule is very simple. The rule is very simple. And don't worry, मैंने कहा ना एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा, हम लोग उसको एक दो बार रिपीट करेंगे. सो हैव पेशेंस, जितना भी समझ में आएगा, every time you build onto the next one. So there are 3, 4, 5 points are there that you need to take care. The very first point you need to understand, यहाँ पर ये क्या है? It is like 5. A 5 is an operand. If it is an operand, append it to the postfix. If it is operand, append it to the postfix. If it is operator, put it onto the stack. If it is an operator, append it to the postfix. If it is operator, put it onto the stack. You continue further. If it is a if it is a operand, append it to the postfix. If it is operator, put it onto the stack. But now remember the rule. Remember the rule. You can put this onto the stack if and only if its priority is greater than the topmost element over here. You can put this onto the stack if and only if its priority
is greater than, I said greater than the priority of this. उल्टा कहते हैं, if the priority of this, listen carefully, if priority of this is greater, priority of this is greater or equal, priority of this is greater or equal, the topmost one, greater or equal, you should be popping it and you need to append it to the postfix. Then you need to append it to the postfix. Now there is nothing to compare. Feel free to put it over here. And then again you continue further, like a 4. 4 is operand, you want to append it. You continue further, multiplication. Multiplication, now you find that इसकी प्रायोरिटी ग्रेटर या इक्वल नहीं है, इसकी प्रायोरिटी ग्रेटर या इक्वल नहीं है, तो इसको आप लोग आराम से इसके ऊपर डाल सकते हो, देयर इज नो ट्रबल. And then you continue further like a parenthesis. What about parenthesis? You always say that the parenthesis is like always highest priority. So it is like always highest priority, उसकी priority check करने की जरूरत ही नहीं है, because parenthesis is as good as a kind of a inner expression that you are trying. If it is like an inner expression that you are trying, blindly put it onto the stack. उसको compare भी मत करो, just put it onto the stack. Then you continue further. You go, let's say 8. 8 is a 8 is a operand. Operand, you append it to the stack, append it to the postfix. You continue, you go like minus. Now minus. Take a look at this. As I said that, what I was trying to tell you is that this is a kind of a mini expression. Expression within expression. Have a look at this. This is a kind of mini expression. This is like an expression within expression. So as good as this one, you are starting with kind of a new stack. It is like as good as you're starting with like a new stack. You are not supposed to really bother about what is parenthesis below, क्योंकि आपको ये expression अलग से solve करना है और उसका जो result आएगा वो बाद में आपको आगे calculation में use करना है. And that is the reason this minus should go on the top of it. This minus should go on the top of it. You continue further. We have got like a 6. You put it there. You continue further. It's a division. A division, priority of this is not greater, not equal to the priority of this. Since it is not greater, not equal, so just put it onto the stack. You continue further. A we have got, let's say 2. You append it. Again, we have got a closing parenthesis. Now, moment you find a closing parenthesis, now you are saying that जो आपका sub expression था, the sub expression is completed. And if your sub expression is completed, ये जो अंदर के जितने सारे आप लोगों ने पुश किए हुए हैं, you pop them, append them. You pop them, append them. You pop them. And now what I found, a sub expression का matching वाला मिल गया, matching वाला मिल गया. Pop that also and discard it. Pop that also and discard it. And you continue further. If you got now plus, but now if it is a plus, I say that the priority of this is greater or equal to this. Pop that and append it. Priority of this greater to nahi hai lekin equal to this. Just pop and append that. Continue further. You put it onto the stack. Now you continue further. We have got like a 1. You put it there. Next, we have got like a, sorry, the next one we got dollar. Dollar, put it onto the stack, right? You continue further. Parenthesis sub expression begins. Put it directly, not to worry. You continue further. We have, let's say 7, 7, 7, 7, 7. You continue once again. Let's say minus, minus. A minus, it is like a sub expression, so you can put it onto the stack. Program के बारे में मत सोचो, अभी algorithm के बारे में मत सोचो. Like a 3, it is all right. Again, the parenthesis is completed. Parenthesis completed. So you go ahead. Parenthesis completed. तो जब तक opening नहीं मिलता तब तक एक एक pop करो और इसको append करो. Opening मिल गया है, उसको ले लो और इसको kind of discard करो. That is also done. You continue further. You have got, let's say dollar. अब बाकी by the way और कुछ बचा ही नहीं है. Now everything is finished. जो कुछ भी बचा है उसको stack से निकालो और उसको append करते जाओ. Stack से निकालो और उसको append करते जाओ. That is what all we have taken up.
and this is nothing but our postfix. This is nothing but our postfix. क्या कल हम लोगों ने यही postfix निकाला था? कल का हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया था 59 प्लस 4862 59 प्लस 4862 डिवीजन माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस 173 माइनस डॉलर प्लस. यस, इट लुक लाइक इट वाज एग्जैक्टली सेम वन. डोंट वरी, मैं फिर से पूरा रिपीट करता हूँ, फिर से उसका एल्गोरिथम लिख के देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से रिपीट करता हूँ, और उसके बाद में भी क्लियर नहीं होगा, देन लेट मी नो, देन लेट मी नो. आप उसकी चिंता मत करो. सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट पे अटेंशन. आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर. तो कुछ बेसिक रूल्स जो हमको यहां से समझ में आए, जो बेसिक रूल्स आपको समझ में आए, ट्राई टू रिवाइज, ट्राई टू रिकॉल द रूल्स. द रूल्स वेर समथिंग लाइक दिस. अगर ऑपरेंड मिला तो क्या करना है? ऑपरेंड मिला तो क्या करना है? अगर ऑपरेंड मिला तो क्या करना है? तो उसको अपेंड करना है, पोस्टफिक्स में अपेंड करना है. यस, आई अंडरस्टूड. द सेकंड, अगर ऑपरेटर मिला तो क्या करना है? ऑपरेटर मिला तो बेसिकली स्टैक के ऊपर डालना है. बट बट डायरेक्टली स्टैक के ऊपर नहीं डालना है. अगर स्टैक का जो टॉप मोस्ट है, अगर उसकी प्रायोरिटी ग्रेटर है या इक्वल है, स्टैक में अगर जो है उसकी प्रायोरिटी अगर ग्रेटर है या इक्वल है, स्टैक का जो टॉप मोस्ट है उसकी प्रायोरिटी ग्रेटर है या इक्वल है, वहां से उसको पॉप करना है. वहां से उसको पॉप करना है और उसको पोस्टफिक्स में अपेंड करना है. उसको पोस्टफिक्स में अपेंड करना है. दैट वी नीड टू टेक केयर. एंड देन अगर ऐसा कोई नहीं रहेगा, ऐसा कोई नहीं रहेगा, तो फिर आप लोग करंट वाले को उसके अंदर पुश कर सकते हो. दैट इज व्हाट वी डू. सो वन थिंग इज श्योर, लिसन केयरफुली. अगर ऑपरेंड होगा तो अपेंड करना है, और अगर ऑपरेटर होगा तो पुश करना है विद द कंडीशन, विद द प्रेसिडेंस कंडीशन. अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा, अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा, अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा, तो ज्यादा सोचना नहीं है, उसको सीधा सीधा स्टैक के ऊपर पुश कर देना है. क्योंकि अब एक हमारा मिनी एक्सप्रेशन चालू हो रहा है, एक्सप्रेशन के अंदर का सब एक्सप्रेशन चालू हो रहा है. इसलिए फॉर दैट सब एक्सप्रेशन, जो पैरेंथेसिस ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा उसको एज इट इज स्टैक के ऊपर डालना है. और जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा, क्लोजिंग पैरेंथेसिस जब आएगा तो हमें क्या करना है? फॉर द क्लोजिंग पैरेंथेसिस, जितने सारे स्टैक के ऊपर है उनको वन बाय वन पॉप करना है. जितने सारे स्टैक के ऊपर है उनको वन बाय वन पॉप करना है, जब तक ओपनिंग वापस से नहीं मिलता तब तक. जब तक ओपनिंग वापस से नहीं मिलता तब तक ये सब कुछ पॉप करना है. इट इज डन. एंड फाइनली व्हेन दैट इज आल्सो डन, व्हाट इज नेक्स्ट जॉब? व्हेन दैट इज आल्सो डन, व्हाट इज द नेक्स्ट जॉब? इज फाइनली नेक्स्ट जॉब. अच्छा, ऑब्वियसली उसको डिस्कार्ड तो करना ही है, नो डाउट ऑन दैट. जब सारे एक्सप्रेशन खत्म हो जाएंगे तो जितने बचे हैं उतने सारे के सारे पॉप करने हैं और सारे के सारे अपेंड करने हैं. आई होप नाउ दिस इज ओके. चलो फिर से एक बार करके देखते हैं. आई गेस नाउ यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन. लेट्स सी. 5 5 is a operand. If it is operand, append it to the stack. Okay, that is sorry, append it to the postfix. Continue further. Plus is operator. प्लस इज ऑपरेटर. यहाँ पर चेक करने लायक कुछ नहीं है तो इसको स्टैक के ऊपर डाल सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. यू कंटिन्यू फर्दर. लाइक वी हैव गॉट 9 over there, you append it over there. Continue next. We have got, let's say, minus there, minus there. What I said, अगर टॉप मोस्ट का प्रायोरिटी ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, टॉप मोस्ट का प्रायोरिटी ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, अभी हमारे केस में इक्वल है, उसको यहां से निकालो और इसको अपेंड कर दो. Okay, it is done, not a problem. Next one is 4. 4 is a operand, just append it. By the way, इसको पुश करना रह गया. It is to be push ना, उसको निकाल दिया तो इसको पुश करना चाहिए. No problem. You continue further. You continue further. Next, we have like a multiplication. As we have got a multiplication, what multiplication does? Multiplication क्या करना है? You find that the priority of this, a priority of this is a priority of this is not greater nor equal. तो इसको आराम से हम लोग स्टैक के ऊपर डाल सकते हैं. There is no trouble. We started with the opening parenthesis. Opening parenthesis आया, कुछ सोचना नहीं है, इसको चुपचाप से स्टैक के ऊपर डालना है, उसको कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है. Just put it onto the stack. Then you continue further. We have got, let's say, 8. We have got 8. It is the operand. You just append it. Then you have got like a minus.
नो माइनस ऐसे सब एक्सप्रेशन ये उसके अंदर का है, तो इसको माइनस को भी पुश कर दिया। नेक्स्ट वी हैव लाइक अ 6, वी नीड टू अपेंड, वी हैव लाइक division sign. Again, the priority of the topmost, a priority of the topmost is greater नहीं है, equal भी नहीं है, तो division can go safely onto this. Okay, that is absolutely fine. You continue further. Next is what, say 2. 2, it is operand, so append it. We have got closing parenthesis. If you have got a closing parenthesis, what is to be done? Pop 1, append it. Pop 2, append it. Keep on doing it until you find the opening. Please note, वो जो ओपनिंग है, ओपनिंग आपको मैच भी करना है और ओपनिंग को स्टैक से निकालना भी है, उसको स्टैक से निकालना भी है और उसको कहीं पर अपेंड नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। वी से डिस्कार्ड, हमें उसको डिस्कार्ड करना है। डन। यू कंटिन्यू फर्दर, नाउ इट इज लाइक अ प्लस, बट अगेन व्हाट वी से, द प्रायोरिटी ऑफ दिस इज ग्रेटर, तो टॉप मोस्ट का प्रायोरिटी ग्रेटर है, उसको अपेंड करो। Don't do only one comparison, do the next comparison also. Priority of this is equal, वो इक्वल है उसको भी निकालो। तो यहाँ पर हमें प्रायोरिटी एक बार नहीं चेक करनी है, हमें लूप में चेक करनी है, तो हम लोग उसको वहां पर भी निकालते हैं। एंड नाउ देयर इज नथिंग टू कंपेयर, सो प्लस कैन गो सेफली देयर। यू कंटिन्यू फर्दर। वी हैव लेटर 1 अपेंड डॉलर, the priority of plus is not greater than, a priority of plus is not greater than this, so dollar will sit on the top of this, no problem. Sub expression started, continue further. We have got 7, we have got minus goes inside this, 3 operand closing parenthesis. So जब तक वापस से ओपनिंग नहीं आता तब तक 1 by 1 पॉप कर लो और इसको भी पॉप कर लो और उसको डिस्कार्ड कर लो। Now you find that everything from this is completed. If everything is completed, जितना भी बच गया है उसको 1 by 1 निकालो और अपेंड करो, जितना भी बच गया है उसको 1 by 1 निकालो और अपेंड करो। That's it. This is what infix to postfix algorithm is all about. तो infix को to postfix में क्या करते हैं, बस इतना ही करते हैं और कुछ नहीं करते। Now just if you want the points to highlight, I'll just mention somewhere. You see, अगेन मैं अल्गोरिदम नहीं लिख रहा हूं, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं। अल्गोरिदम स्टेप वाइज होता है, मैं स्टेप वाइज नहीं जा रहा हूं, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। अब इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है और बाद में हमें पूरा अल्गोरिदम लिखना है, ये याद रखना। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट आई एम सेइंग, द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई अंडरस्टैंड दैट ये जो इनफिक्स था, इनफिक्स व्हाट इज दैट, अरे ट्रैवर्स इनफिक्स फ्रॉम left to right, a traverse infix from left to right. It is done, it's not a problem. The second one, what is second one? अब हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट करना है। अब हमें सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट अबाउट ऑपरेंड्स? कैन यू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट? इफ ऑपरेंड फाउंड, कैन यू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट? yes, append, append to postfix. Okay, that is good. Next, if operator is found, yes, definitely I want to push to the stack. But remember, conditions applied. This is the conditions applied. What is the condition? The condition over there is if priority of topmost operator on stack, a topmost operator मतलब हम लोग peak operation की बात कर रहे हैं। So priority of the topmost operator on the stack is greater or equal to priority of current operator। क्या करना है,
क्या करना है? अगर टॉप मोस्ट की प्रायोरिटी ग्रेटर होती है या इक्वल होती है तो क्या करना है? हाँ, yes, we need to first, yes, pop it from stack, pop it from stack and append to postfix, append to postfix. ऑब्वियसली हमें इसको स्टैक के ऊपर डालना ही है, लेकिन उसके पहले कंडीशन है कि अगर प्रायोरिटी ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑन टू द स्टैक इज ग्रेटर और इक्वल टू द प्रायोरिटी ऑफ द करंट ऑपरेटर, पॉप इट फ्रॉम द स्टैक एंड अपेंड इट टू द पोस्टफिक्स. ओके, चलो, आई अंडरस्टूड दिस एज वेल. What about fourth point that I need to remember is that if opening parenthesis is found, if opening parenthesis is found, what you are saying? If opening parenthesis is found, what is to be done, guys? Yes, अभी कुछ नहीं करना है, चेक भी नहीं करना है, कंपेयर भी नहीं करना है. Push it on stack. Push it on stack. That we will take care. What about next? If closing parenthesis is found, if closing parenthesis is found, what is to be done? I'm saying pop operators from stack and append to postfix and append to postfix until opening is found, until opening is found. But wait, what about that opening? Also pop and discard. मैं discard क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसको आपको append नहीं करना है. Opening from stack, like a point number 5. Point number 6, probably the last point. A last point. What is the last point? If all symbols from, if all symbols from infix are done, are completed, what is to be done? Yes, pop one by one and append to postfix, append to postfix, and this is nothing but the whole algorithm is. आप लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट इसका मार के रखना, so that you can hand it, take up this in background. वैसे मैं इसको कमेंट में लिखने ही वाला हूँ, but still I would suggest that एक screenshot मार के रखना, so that immediately if you get confused somewhere, you can always take a look at this and then you can understand it, right? So I'm just going back. I hope this is still comfortable. Still not comfortable, I'll do it once again for you. I'll do once again for you, and then let me know if it is okay, not okay for you, whatever. Let's just go ahead. If brackets are like 8 divided by 2 minus 6, what is the problem? कोई problem नहीं है in that case. Janvi, I guess there should not be any problem. In that case, what will happen? The division will go first. The division will go first, and if the division goes first, it will also come out first, no? क्योंकि minus तो उसके ऊपर नहीं जाएगा. It's clear? Understood? Okay, that is great. तो एक काम करते हैं, let us just go back and then we will write a code for that. We'll write a code for that, and again not code for that, first comments for that. ये जो 5 पॉइंट अभी मैंने यहाँ पर कहे थे, let me write all 5 points over here, 6 points over here, and then we will see how we can convert it into the code as such. I'm going it one by one. क्या करना है? Traverse infix expression from left to right. That is all. That was my first point. Yes, I want to traverse from left to right. What is second point? Second point, if operand found, if operand is found, push it on the stack, on the stack. That is great. If operator is found, if operator is found, if operator is found, I'm saying that
पुट इट, मैंने कुछ उल्टा किया क्या, सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा हो गया, वो फ्लो में मैं भूल गया. Append to postfix, append to postfix. I hope now this is okay. So now it is append to postfix, and if the operator is found, push it onto the stack. By the way, but push it onto the stack not straight away, उसमें terms and conditions applied है. If the priority of, if the priority of topmost element, topmost operator from stack is greater than or equal to priority of current operator, what is to be done? I say that pop operator from stack and append to postfix. All right, append to postfix, and this is something we need to do. कोई बात नहीं, you continue further. Point number 4, what is saying that if opening parenthesis is found, then push it on stack without thinking of anything, push it onto the stack. 5th, if closing parenthesis is found, what is to be done? Pop all operators from stack one by one and append to postfix until opening is found. Also pop and discard opening. All right, you continue further. The point number 6, when all symbols, you can say, from infix are completed, are done, what is to be done? Pop all operator from the stack and append them to the postfix one after another. That's it. Are the same 6 points that we are supposed to write it? Okay, good. बाय द वे, यहाँ पर हमें स्ट्रिंग में बार बार अपेंड करने की जरूरत पड़ रही है. अगर हमें एफिशिएंटली स्ट्रिंग को अगर बार बार अपेंड करना है तो हमें क्या करना चाहिए जावा एक्सपर्ट्स? अगर हमें स्ट्रिंग को बार बार अपेंड करना है तो विच वन इज बेटर ऑप्शन? यस, आइडियली वी शुड हैव गॉन फॉर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर. सो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दैट विल स्पीड अप, अदरवाइज हमको बार बार प्लस करना पड़ेगा. दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. वैसे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है? String buffer is usually used in a threaded environment, multi-threaded environment. अभी हम लोग सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट में, अगर हम लोग सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट में है, then we should prefer a string builder. So I'll simply say like a postfix and I'm making it kind of a string builder so that हम लोग उसके अंदर append, तो वहां पर भी हम लोग सीधा सीधा append का मेथड कॉल कर सकते हैं and the code will even become more readable as well as more efficient. So as we see that, let us just begin one by one. For integer I is equal to 0, I is less than infix dot length I plus plus. So yes, we are traversing from left to right. So जो हमने पहला point कहा था, let us just try to follow that first point. All right, I am following the first point. Let us continue further. The second one, if operand is found, I want to put it onto the stack. Oh, you want to put it on a stack, but to put it on a stack, you need to first have a stack of this. Let me just go ahead. Let me have a stack of characters. Stack of character is equal to new stack. ये हमको character stack के ऊपर push करने हैं, हमें operator stack के ऊपर push करने हैं. Don't forget that. So if operand is found, then we need to what is that? Append it to the postfix, and if the operator is found, then we need to push it onto the stack. Let us do it one by one. If character dot is digit, if it is a digit, current symbol, let me access the symbol one by one.
मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर सिंबल करके डिक्लेयर करता हूँ, सो दैट इट विल हेल्प मी रीडिंग इट इन अ easier way. Okay, and if it is a symbol, is a digit, what do you want to say? You want to append it. So s dot add, and let me add it. What is that symbol? I guess this part is done, so we have taken care of it. What is next? If it is an operator is found, if the operator is found, how do I know that it is operator? If it is operator, I'll just say that if it is operator, कैसे ढूंढना है मैं बाद में बताता हूँ. If it is operator, क्या करना है? Put it onto the stack. So let me push it onto the stack. S dot push. S dot push, and I want to push it onto the stack. So what we are saying is that if operator is found, push it onto the stack. So हम लोग उसको stack के ऊपर push कर रहे हैं. That is fine. But what we need to check extra, if the priority of the topmost operator from the stack, okay, if priority of, see it carefully, the priority of topmost element of the stack is greater than or equal to priority of the current operator. Priority of the current operator, what is to be done? You are saying that pop it and append it. Okay, you are saying that pop it and append it. So post dot append and s dot pop. So आप उसको pop कर रहे हो, आप उसको pop कर रहे हो, और pop करने के बाद में आप उसको append कर रहे हो. So that is good. But the question is that सर ये जो प्रायोरिटी है इसके लिए कोई रेडीमेड फंक्शन है? Unfortunately, there is no ready-made function. We need to go ahead and we need to build a function by ourselves. जैसे कल एक कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने एक टेम्पररी फंक्शन बनाया था, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेटर के लिए एक टेम्पररी फंक्शन बनाया था, ऑन द पैरेलल लाइन हम लोग यहाँ पर एक प्रायोरिटी चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, एंड दैट इज जस्ट अ डमी फंक्शन. तो इट इज अप टू यू. सो कैरेक्टर, आई कैन से ऑपरेटर, और कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी कितनी है उसके हिसाब से हमें कोड लिखना है. तो लिखो फटाफट से. इफ द ऑपरेटर प्रायोरिटी इज डॉलर, ये ऑपरेटर प्रायोरिटी इज डॉलर, तो आई गेस इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. You return some number which is indicating which should be highest number. Okay, that is good. सर वो 10 क्यों लिखा? कुछ भी लिखो, choice is yours. Number is not important. What is important, that multiplication priority is smaller than that. What is important? Multiplication priority is smaller than that, but the division and modulus priority is same as multiplication. I repeat once again, these numbers are not important. The numbers comparison is important. So I'm saying that 10 is greater and 7 is smaller. Okay, that is good. Then you continue further. Then you write it. If it is plus, then you need to understand that it should be even smaller than that. Oh, it has to be even smaller than that. Again, you return some number which is even smaller than that. Even smaller than that. We have just taken care. If nothing is matching, I'm just returning 0. Now you ask the question, सर ये 10 7 3 क्यों लिखे? To be frank, आप लोग चाहो तो यहाँ पर 3 2 1 भी लिख सकते हो. There is absolutely no problem. Choice is yours. The numbers are not important. मैं फिर से बता रहा हूँ. Numbers are not important. Do not consider the numbers. Consider their क्या कहते हैं उसको, relative precedence. So I'm saying that dollar is highest. ये important है. Star, division and modulus should be equal but lower than the dollar. Plus and minus should be lower than the multiplication division, and they plus and minus should be equal. I hope you are getting the point. Parenthesis I am not checking. So Mallika, at any moment the parenthesis compare नहीं हो रहा है, then it will be 0. पैरेंथेसिस अगर कंपैरिजन के लिए आएगा तो भी वो 0 कंसीडर होने वाला है. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं पैरेंथेसिस को अलग से यहाँ पर प्रेसिडेंट चेक नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी हम उसको ब्लाइंडली पुश कर रहे हैं. सो हम लोग ने ये डिसाइड किया हुआ है. सो दैट इज गोइंग वेल. नाउ आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर. सो ये प्रायोरिटी वाला फंक्शन काम करेगा. बट बाय द वे, ये आपको एक बार करना है या बार बार करना है? ये आपको एक बार करना है या बार बार करना है? Yes, larger the return value, larger is the precedence. Correct, Shubham? Whatever you are saying is correct. जितना larger return value हम लोग कर रहे हैं, उतना larger हम लोग precedence consider कर रहे हैं. So ये हमको एक बार नहीं करना है, ये हमें बार बार करना है. While and एक और चीज, ये आप लोग topmost element कब ले सकते हो?
जब स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट होगा तब। अगर स्टैक के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, अगर स्टैक के अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो लार्जेस्ट एलिमेंट कहां से आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो यू जस्ट कंटिन्यू फर्दर, स्टैक इज एम्प्टी व्हेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी, when stack is not empty, then and only then, if the stack is not empty, then and only then check the topmost element. Otherwise what will happen, अगर आपने not empty का condition check नहीं किया, this will probably directly throw stack empty exception. I hope you are getting the point. तो पहले आप लोग ये check कर लो, if the stack is not empty, if the stack is not empty, then and only then the priority of the topmost element is greater than equal to priority of the symbol, current symbol. So that is also done if you have taken care. What is the next part? The next part, if opening parenthesis is found, push it onto the stack. Okay, that is good. If opening is found, if symbol is equal to opening, मुझको कुछ नहीं सोचना है, मुझको चुपचाप से उसको stack के ऊपर डाल देना है. So I'm just pushing it onto the stack. Okay, that is good. What is next? If closing is found, that is also good. If symbol is equal to closing. If it is closing, what is to be done? If it is closing, what is to be done? What you are saying is that until opening is found, until opening is found, what do you need to do? You need to pop all. Okay, कह रहे हो तो लिखो उसको. While what is that, s dot peak is not equal to opening, until opening is found, what is to be done? Pop one by one and append it to the postfix. Okay, pop one by one and append it to the postfix. Okay, understand that. If closing is found, pop all operator from this and etc etc etc. So what you are writing over there, let me complete it over here. Chalo, done. And at the same time you need to also pop, अभी जो topmost है, topmost कौन सा होगा, opening वाला होगा. topmost अगर opening वाला होगा तो उसको भी skip कर दो. टॉपमोस्ट अगर ओपनिंग वाला होगा तो उसको भी स्किप कर दो, उसको भी पॉप कर लो, और उसकी रिटर्न वैल्यू कहीं पर कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको अपेंड करने की जरूरत नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दो. चलो वो भी डिस्कार्ड कर दिया. व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट आई गेस वी कंटिन्यू फर्दर. द लास्ट वन, द लास्ट वन, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक सब कुछ पॉप करो एंड अपेंड करो, कोई बात नहीं. सो पोस्ट डॉट अपेंड s post dot append और that s dot pop करो और append करो, खत्म होगा, डन. तो सर इज इट कंप्लीटेड? ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. ये स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बिल्डर हमें रिटर्न नहीं करना है, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना है. सो यू कैन ऑलवेज कॉल इट टू स्ट्रिंग मेथड. सो माय कोड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बट देयर इज समथिंग स्टिल पेंडिंग. इफ ऑपरेटर इज फाउंड, इफ ऑपरेटर इज फाउंड, अरे वो तो हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया, तो ऑपरेटर है ये हमें कैसे पता चलेगा? एक तरीका ये है कि आप लोग मैन्युअली जितने ऑपरेटर आप लोग चेक करने वाले हो उनको कहीं पर तो लिस्ट में डाल के रखो, प्लस माइनस वगैरह वगैरह, और उसके साथ मैच कर लो इफ इट इज मैचिंग विद दिस. ऑप्शन नंबर वन. ऑप्शन नंबर टू, आई कैन रीअरेंज दिस कोड, आई कैन रीअरेंज दिस कोड. एक ऑपरेंड का कोड हो गया, वेरी गुड. उसके बाद में हैव अ लुक एट दिस. उसके बाद में आई एम गोइंग अहेड and checking else part. I'm checking for if it is opening is found, let me write that code. Opening वाला code हो गया. else I'm again continuing with this. I'm again continuing with this, and now with this else, let me go ahead with the code of closing as well. Code of closing as well. So we are managing the code of closing. This is also done. This is also done. So what I'm saying is that we are just going one by one and we are checking it. अच्छा ये condition है तो ये करो, ये condition है तो ये करो, ये condition है तो ये करो. So we are just trying to rearrange our code. 2 मिनट दे दो मुझको, थोड़ा सा opening और closing parenthesis टिक करने दो, so that we can make it bit more readable. और वो comments जो आपके हैं, comments भी वहीं पर रहने चाहिए. ये रहा comment उसके सामने. That is good. And finally ये जो last वाला else है, that is nothing but my operator. That is nothing but my operator. अभी और कुछ बचेगा ही नहीं ना. हम लोगों ने ओपनिंग कंसीडर कर लिया, क्लोजिंग कंसीडर कर लिया, हम लोगों ने डिजिट भी कंसीडर कर लिया.
अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा. So that I am considering that as an operator. So अगर वो ओपनिंग भी नहीं है, अगर वो क्लोजिंग भी नहीं है, तो फाइनली वो ऑपरेटर है. ये बताने की अभी अलग से जरूरत नहीं है. So that we have taken care. So that is done. That is done. That is done. Let me check if it is everything is okay. Look like okay. So ये कोड चलेगा. Let's see whether it works, whether it don't work. Infix to postfix, and let me try to print the postfix. Done. Click run as, and if spelling mistake is not done, this should work. Is it working? Final result -5 आया है, मतलब आई एम वेरी श्योर दिस मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने हार्ड कोडेड नहीं लिया था, राइट? Don't worry, I'll explain everything once again. No problem. So I was trying to tell you again. I want you people to go through this first. Please read this. Take a little time. Take a little time. Just read it once, and then I'll again go through the whole code once again. Please read this once again. Go through, and I'll go through the whole code once again. You don't worry. And still any problem is there in algorithm, I'll go through that as well. Okay, so let us go step by step. The very first step saying that traverse infix from left to right. अब मैं code level पे जा रहा हूँ. Traverse infix from left to right. So you start with like a 0th index. Start with the 0th index, and you reach till the last index I plus plus. And every time I am fetching one current symbol. Now symbol can be operand. Listen, possibilities क्या क्या है? Over here, अगर हम लोग हर एक symbol fetch कर रहे हैं, तो symbol क्या क्या हो सकता है? A symbol can be operand. Symbol can be opening parenthesis. Symbol can be closing parenthesis, और symbol can be operator. I hope you agree. जो हम लोगों ने जो string लिया है, इस string में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं. या तो वो operand है, या तो operand है, या तो वो operator है, या तो opening parenthesis है, या तो closing parenthesis है. Do you agree with this? करेक्ट. सो अल्टीमेटली हर एक सिंबल में इन चार के अलावा और कोई केस नहीं होने वाला. अवर इट इज वेरी सिंपल दैट इट इज आइदर ऑपरेंड, और इट इज ओपनिंग, और इट इज क्लोजिंग, और इट इज ऑपरेटर. नो प्रॉब्लम. आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर. इफ ऑपरेंड इज फाउंड, इफ ऑपरेंड इज फाउंड, तो सबसे पहले चारों में से हम लोग पहला चेक कर रहे हैं ऑपरेंड. if it is operand, if it is operand, I'm just checking that if it is a digit, if it is a digit, I can say that yes, it is operand. If it is operand, append it to the postfix. So जो ऊपर हम लोग postfix बनाया हुआ है, उस postfix को हम लोग append कर रहे हैं. That is the first part. If it is if it is closing, sorry, if it is opening parenthesis, if it is opening parenthesis, if it is opening parenthesis, our logic says that हमें इसको stack के ऊपर push करना है. So we simply written a code s dot push symbol. तो जो भी symbol था, opening वाला symbol था, उसको चुपचाप से हम लोगों ने stack के ऊपर push कर दिया. Nothing extra that we have done. You continue further. You continue further. अब बचा क्या? एक मिनट, दो कंडीशन तो हमने चेक कर ली. ऑपरेंड हो गया, ओपनिंग हो गया. सर अगर वो क्लोजिंग होगा तो क्या करना है? ओके, क्लोजिंग होगा तो क्या करना है? इफ इट इज क्लोजिंग, else if it is closing, if it is closing, we are saying that pop all operator from the stack one by one and append to the postfix until opening is found. तो I'm saying that जब तक stack के top के ऊपर opening नहीं आ जाता, तब तक एक एक को पॉप करो, हर एक को पॉप करो, और उसको अपेंड करो. ए पॉप करो और अपेंड करो, पॉप करो और अपेंड करो. कीप ऑन डूइंग इट. लेकिन ये याद रखना, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो स्टैक के टॉप पे कौन सा रहने वाला है? इस स्टैक के टॉप के ऊपर ओपनिंग रहने वाला है. मुझको उसको स्टैक के ऊपर नहीं रखना है, और मुझको उसको पोस्टफिक्स में भी नहीं डालना है. तो ये जो पॉप है, दिस पॉप विल टेक केयर ऑफ पॉपिंग दैट ओपनिंग विच इज ऑन द टॉप. उसको हम लोग निकाल रहे हैं, और उसको हम लोग कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो स्टैक में कलेक्ट कर रहे हैं, ना तो पोस्टफिक्स में कलेक्ट कर रहे हैं. हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं. ओके, दैट इज फाइन. By the way, you finish with the operand, you finish with the opening, you finish with the closing.
Now what is left? अब एक ही तो बचा है, operator. So if it is operator, what is to be done? Oh, put it onto the stack. If it is operator, what do you want to do? Yes, I want to put it onto the stack. But if you want to put it onto the stack, when you want to put it onto the stack, you want to put it on the stack, usse pehle you want to check if the priority of the topmost element, a priority of the topmost element h dot peak will give me the topmost element. If the priority of the topmost element is greater than or equal to priority of the current element, is greater than or equal to priority of the current element, then I want to pop it and I want to append it. I want to pop it and I want to append it. I want to pop it and I want to append it. Again, but the problem over is that हम लोग topmost element कब check करेंगे? Topmost element कब check करेंगे? जब stack के अंदर element होगा तब. अगर stack के अंदर element ही नहीं है, अगर stack के अंदर element ही नहीं है, तो आप pop किसको कर रहे हो? I hope you are getting my point. तो you go over here while stack is not empty. So आप लोग पहले ये condition check कर रहे हो कि stack is not empty, then and only then check the priority of the topmost. Then and only then they check the priority of the topmost. If stack is empty, तो चुपचाप से बाहर आ जाओ और डायरेक्टली इसको पुश कर दो. So दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. I want to come out. So I'm saying that if at all I found that stack is empty, if at all I found that stack is empty, then I will just come out and I will append it. I will push it onto the stack. लेकिन if stack is not empty, if stack is not empty, if stack is not empty, then I need to get the priority of the topmost. And to get the priority of the topmost, if it is greater than equal to priority of the current symbol, greater than equal to priority of the current symbol, then pop that particular symbol from the stack and append it into the postfix. Append it to the postfix. I hope this is clear. So operator condition. So Mohan, I guess I have explained you operator condition. This is what a condition that we had written there. Correct? And Saurabh, this is like a line number 110. No problem. And then, by the way, you just continue further. When all symbols from infix are completed, तो please note ये जो for का loop लिखा था, ये for का loop हमारा यहाँ पर close हो रहा है. Please note this is end of for loop. जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था वो यहाँ पर खत्म हो रहा है. और उसके बाद में what you are doing, while stack is not empty, जितने भी है एक पॉप करो और उसको अपेंड करो, पॉप करो और अपेंड करो. फाइनली ये पोस्ट जो है वो आपका क्या है? स्ट्रिंग बिल्डर है. हमें स्ट्रिंग बिल्डर नहीं रिटर्न करना था, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना था. तो अल्टीमेटली स्ट्रिंग बिल्डर का डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर लो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो एंड देन यू आर डन विथ. और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है. दैट्स इट. नाउ इज इट वर्किंग? Is it working? It is in front of you. Run a Java application. So ये रहा आपका postfix and it is working well. Naneshwar का question है, can you repeat why we have taken string builder because of network issue? I didn't get it. No problem. I am repeating. मैं कहाँ पर था? भूल गया. हाँ, नैनेश्वर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था. तो why we have used string builder? वैसे आप लोग नॉर्मल स्ट्रिंग लेते तो काम हो जाता क्या? टू बी फ्रैंक, नॉर्मल स्ट्रिंग लेते तो काम हो जाता, देयर वाज नॉट अ प्रॉब्लम. आप लोग नॉर्मल स्ट्रिंग लेते तो भी काम हो जाता, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता? हर बार अपेंड करने के लिए आपको ऐसे कुछ करना पड़ता. पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट प्लस सिंबल, ए पोस्ट प्लस सिंबल. आपको ऐसा कुछ लॉजिक लिखना पड़ता हर बार उसको अपेंड करने के लिए. अब आप लोगों ने जावा में पढ़ा है कि जावा की स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. And since strings are immutable, every time you are doing plus, every time you are doing some operation, what is going to happen? A new string object is going to be created. अब unnecessary आप लोग more and more string object create करोगे तो उसने memory भी जाएगी, उतना time भी जाएगा. And that is the reason, what is the better option over here? The better option is that we can use either string builder or we can use string buffer. जब हमें पता है हमें बार बार mutability करना है, बार बार modification करना है, तो instead of string, string builder is preferred in Java. And since string builder is preferred in Java, so I am using string builder. वैसे string buffer भी कर सकते थे, लेकिन string buffer हम लोग mainly synchronized environment में या multi-threaded environment में use करते हैं.
यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर रहे हैं ताकि हमें हमें पता है हम लोग सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रिंग बफर की कोई जरूरत नहीं है। आई होप ज्ञानेश्वर दैट इज क्लियर, राइट? तो इट इज देयर। अक्षय, मैं फिर से पूछ रहा हूँ यार, प्लीज पोस्ट क्वेश्चन पब्लिकली। इफ ऑपरेटर इज फाउंड, व्हाट यू वांट टू डू? अक्षय, कैन यू चेक? आपको बेसिकली करना क्या है? इफ ऑपरेटर इज फाउंड, पुश इट ऑन टू द स्टैक। सो यू वांट टू पुश इट ऑन टू द स्टैक। तो दिस कोड pushing onto the stack, this is written on line number 114. So line number 114, ultimately this is just a completion of this part. This is just completion of this part. If operator is found, वैसे तो उसको स्टैक के ऊपर पुश करना है, लेकिन बीच में जो कंडीशंस अप्लाइड थे उतना पार्ट मुझको अलग से चेक करना था, तो मैंने चेक कर लिया। इज दैट ओके? अक्षय पवार, डन? चलो, एनी अदर पार्ट? Why don't you people try it, compile it, run it at your place, check it if is it working for you? I'll wait a little. And as I said that अगर आपको infix to postfix समझ में आता है, infix to prefix is the same algorithm. It is same algorithm with little tricks here and there. With little tricks here and there. बाकी आपको अलग से कुछ नहीं करना है. I'm waiting for the people to complete it. Good. Algorithm was clear to everyone. If it is need to be revised, let me know. मैंने कोड 2 बार एक्सप्लेन किया, मैंने algorithm भी 2 बार एक्सप्लेन किया. Obviously आपको 100% कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप उसको 2-4 बार करोगे. Anyone saying that sir आपने पूरा पढ़ाया, आपने 2 बार पढ़ाया, लेकिन सर आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. You cannot be very confident unless and until you have done it 4-5 times. Please understand that. डेटा स्ट्रक्चर में कॉन्फिडेंस दूसरे के बताने से कभी नहीं आता है, वो खुद के करने से आता है. तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. आई एम वेरी श्योर एज यू गो टू द लैब, आप लोग वापस से ये सारा पेपर वर्क खुद से करोगे, वापस से एक बार कोड खुद से टाइप करोगे, एंड देन आइडियली यू शुड बी कॉन्फिडेंट, एंड देन यू विल बी, नॉट अ प्रॉब्लम. चलो, अब सर infix to prefix, I'm not going to explain the paperwork, but let me write a code for you. मैं आपको कोड लिख के देता हूं, मैं आपको कोड के चेंजेस बताता हूं, पेपर वर्क आप लोग कर लेना, राइट? सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डोंट वरी, जो मुश्किल वाला काम था वो मैं खत्म कर रहा हूं. और मुश्किल वाला काम क्या था? सर कोड लिखने नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोड मैं लिख के देता हूं, आप चिंता मत करना. सो यू स्टार्ट विथ infix to prefix. Pay attention. Infix to prefix. Let us go ahead. And in an infix to prefix, what we are doing? The very first thing, you need to traverse the infix expression from right to left. You need to traverse infix expression from right to left. We will quickly see this and then we will take a break. Right to left मतलब कैसे करना है? Like a infix dot length -1, I is greater than or equal to 0. Okay, that is good. And then you say I minus minus. All right, first part is done. Then you get the symbol one by one, that is okay, good. What you are saying, character is a digit, append it into the this prefix, absolutely fine. There is nothing much to be done into that. That is still correct. अब एक बात बताओ, आप लोग लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे हो, आप लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हो. कॉमन सेंस सोचो, अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो आपको पहले ओपनिंग आएगा या पहले क्लोजिंग आएगा? अगर आप लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो पहले आपको ओपनिंग आएगा, क्लोजिंग आएगा? कॉमन सेंस है, पहले हमें क्लोजिंग आएगा क्योंकि हम लोग उल्टा जा रहे हैं. नाउ जस्ट रिवर्स द एल्गोरिथम. सो इफ क्लोजिंग इज फाउंड,
क्योंकि हमें पहले क्लोजिंग आने वाला है. If closing is found, push it onto the stack. Okay, that is good. And if opening is found, if opening is found, if opening is found, if opening is found, all operator from the stack one by one and until closing is found, until closing is found. All right. तो जब तक क्लोजिंग नहीं आता है, जब तक क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक वन बाय वन पॉप करो और उनको अपेंड करो. फाइनली वो जो क्लोजिंग स्टैक के ऊपर मिला था, उस क्लोजिंग को भी पॉप करो और डिस्कार्ड करो. मैंने कहा ना, इट इज एग्जैक्टली सेम. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं. अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो पहले क्लोजिंग आएगा, और अगर पहले क्लोजिंग आएगा तो पहले क्लोजिंग को स्टैक के ऊपर डाल दो, और फिर जब ओपनिंग आएगा तो सारे वन बाय वन पॉप करो, अपेंड करो, जब तक क्लोजिंग नहीं मिलता तब तक. और जैसे ही क्लोजिंग मिल गया तो रुक जाओ और बाद में उस क्लोजिंग को भी डिस्कार्ड कर दो. इट इज एग्जैक्टली सेम वी आर डूइंग. Now, finally, if it is operator is found, if it is operator found, what I'm saying, push it onto the stack. Oh, that is still true with one small change. Pay attention. One very small change. Pay attention. If priority of the topmost element, topmost operator from the stack is greater than or equal to nahi hai. It is greater than. It is not greater than equal to. It is only greater than. It is only greater than equal to only greater than. Then the priority of the current operator. That's it. You do that, you append that. This is also done. Over. और कुछ बच गया है. जहां पर मैंने पोस्टफिक्स वर्ड लिखा है, शायद वहां पर मुझको प्रीफिक्स वर्ड लिखना चाहिए. प्रीफिक्स वर्ड लिखना चाहिए कमेंट में. जहां पर पोस्टफिक्स वर्ड लिखा है वहां पर मुझको प्रीफिक्स वर्ड लिखना चाहिए. डन. End of for loop. When all symbols for infix are done, pop all one by one and then put it to the prefix. Okay, is it so? Yes, all that we need to do is that if stack is not empty, we need to pop all and we need to append it. So is it done? Yes, it is done. Only last change, point number 7, जो पहले इसमें नहीं था. Point number 7 to be added. Reverse the prefix string, prefix and return. What I'm saying that पहले रिवर्स करो और बाद में रिटर्न करो. तो ये जो आपका प्रीफिक्स है उसको रिवर्स करो और बाद में रिटर्न करना. डोंट फॉरगेट दैट. सो फर्स्ट रिवर्स इट एंड देन रिटर्न इट. ओके. हाँ, कुछ अभी कमेंट में उल्टा सीधा हो गया होगा. लेट मी जस्ट फाइंड आउट क्विकली. सो लाइन नंबर 136, someone is saying line number 136, if pop all operator from the stack append to prefix until closing is found. I guess it is clear, correct, no? 134. If opening is found, yes, that is correct. उसका parenthesis उल्टा हो गया, that is okay. वो मैंने word change कर दिया, parenthesis change करना रह गया. That's it. By the way, यहाँ पर point number 7 extra है. What is point number 7 extra है? Reverse the prefix and then return it. Okay, that is also done. And if it is also done, तो सर ये काम करेगा? I don't know. Let's see. ये काम करता है, नहीं काम करता है, whatever. So again, I'm saying that prefix is equal to infix to prefix. Infix to prefix. We pass infix to this, and we want to print that prefix as well. Okay. We want to print that prefix as well. Prefix as well. Right click, run as Java application. Oh yes, this is prefix. Is it correct? Is it correct? Yes, it is also correct. So as I said that the algorithm is pretty simple. It is just copy paste algorithm. There are a couple of changes. Let me quickly repeat the changes for you. आपको right to left जाना है. पहली चीज, यहाँ पर right to left जाओगे तो पहले closing आएगा, उसको stack के ऊपर push करेंगे. Opening आएगा, अगर opening आया तो जब तक closing नहीं आते तब तक सारे pop करेंगे और उनको append करेंगे. Finally वो जो closing था उसको भी discard करेंगे. As far as the priorities are concerned, ऑपरेटर आया तो उसको स्टैक के ऊपर पुश करेंगे, ऑपरेटर को पुश करेंगे, बट बिफोर दैट इफ द प्रायोरिटी ऑफ द टॉप मोस्ट is greater than the priority of the current, if it is greater than the priority of the current, if it is priority of the topmost is greater than the priority of the current, then append that.
take care of that. This is also done, and rest is everything is okay. Last another point, जो कुछ भी आपका prefix है उसको reverse करना और बाद में return करना, that is what all we need to take care. Nothing special we are doing over here. This is nothing but infix to prefix algorithm. Paperwork I'm leaving it as a homework for you. Algorithm मैंने लिख के दी दिया है, कमेंट में पूरा algorithm में लिखा हुआ है. Sarthak is asking the question, why do we have to reverse? Because if you do not reverse, you get the answer which is wrong answer. You can just check it if you are not sure. इसलिए तो मैंने पेपर वर्क, इसलिए तो मैंने आपको बताया था, you should be doing a paper work for that, so that you appreciate what exactly you get. Have a look at this, Sarthak. Sorry, अगर मैं इसको रिवर्स नहीं करूंगा, अगर मैं इसको रिवर्स नहीं करूंगा, you see the output that you get it. I hope Sarthak you check that. Ultimately the output that you are getting is ulta. सो पेपर वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है कि यार ये प्रीफिक्स नहीं हो रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये एक्चुअली रिवर्स ऑफ इट है, एंड दैट इज द रीजन you need to reverse it and then you need to return it. Do it. I'm very sure you'll be able to get it. Nothing great. So infix to prefix, infix to postfix, and etc. That is done. I believe if it is done, it is absolutely fine. Let us take a break logically, and after the break we can move on to the cues. Meanwhile, you have any questions?